slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, हाय फ्रेंड्स, मैं आज एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। तो उसके लिए क्या लिया और कैसे बनाया देखते हैं। आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने 5 इडली लिया है इधर, मैंने स्लाइस करके लंबा करके काटा है। आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए। मैं कढ़ाई में हम थोड़ा तेल गरम होने के बाद थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सरसों पाँच सात कड़ी पत्ता। मेरे पास फ्रेश कड़ी पत्ता नहीं था तो मैंने सूखा कड़ी पत्ता डाल दिया। और एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक प्याज डाला। इसका हम थोड़ा फ्राई करेंगे। हल्दी पाउडर हाफ चम्मच, मिर्ची पाउडर हाफ चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच। आप मैगी मसाला हो या चिकन मसाला हो डाल सकते हो। बस फ्राई होने देंगे इसको। हमारा प्याज फ्राई हो गया। कटा हुआ इडली को हमें इसमें डाल दिया। इसको प्याज और ये को फ्राई करेंगे। जब भी इडली बनाए तो दूसरा दिन थोड़ा इडली बच जाता है। सांभर तो खत्म हो जाता है लेकिन इससे इडली बचता है। तो मैं ये ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। इडली होता है, खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। अभी हमारा बन गया इडली फ्राई। फ्रेंड्स आप एक बार ट्राई करें और पता है प्लीज़ रेसिपी आपको कैसा लगा मेरी वीडियो। Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.